Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are safe and sound at your homes. Now let's start our class. In today's class, we are going to do topic from unit number 2 map skills, chapter number 3 reading maps and globes, and the topic is time zones. Do you know that different countries share different time zones and the world have different time zones? And every country in this world use their own standard time or follow their own standard time, and every country have different time clocks. Now let's read what time zones are. About 100 years ago, each city had its clock to a local time. Thus each city had a different time. यानी कि 100 साल पहले हर सिटी का एक क्लॉक था जिसका एक लोकल टाइम था और हर सिटी का डिफरेंट टाइम था, यानी कि सेम टाइम नहीं था, हर शहर का मुख्तलिफ वक्त था. दिस डिड नॉट मैटर दैन बट आफ्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एडवांस्ड रैपिडली. यानी कि ये पहले इतना मैटर नहीं करता था, इतनी अहमियत का हामिल नहीं था, लेकिन जब से नकल मकानी और मवासलात का सिलसिला तेज़ी से शुरू हुआ तो इसकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई. दिस डिफरेंस बिकेम ऑकवर्ड. और ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मीन्स अजीब था. When railroads were built and trains had to pass through many cities in a single day, और जब रेलवे स्टेशंस बन गए, रेलवे लाइंस बन गई, तो ट्रेन्स जो थी वो एक दिन में बहुत सारे शहरों से गुजरा करती थी. ट्रेन शेड्यूल्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉमन टाइम सेटिंग्स, और उनके शेड्यूल्स बनाए जाते थे आम वक्त के लिहाज से. एंड बिकॉज ऑफ इट द आइडिया ऑफ टाइम जोन्स वाज अडॉप्टेड. और इन्हीं रेलवे लाइंस की वजह से, ट्रेन्स के शेड्यूल्स की वजह से टाइम जोन का आइडिया जो था वो अडॉप्ट किया गया था, लिया गया था. द अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू 24 सेपरेट टाइम जोन्स. और अर्थ को 24 सेपरेट टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया था. Like we have 24 hours in a day, and as you can see in the picture, it is a time clock of London and the next one is time clock of Delhi. Both have different times. Both the countries follow their standard times. All people living in one time zones add their clock to the same local time. Most countries are small enough to fit into one time zone. और बहुत सी countries ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं कि वो एक time zone फॉलो करें या उसको यूज़ करें. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दैम. ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान फॉलो द सेम टाइम. और पाकिस्तान जो है वो इनमें से, इन स्मॉल कंट्रीज़ में से एक है जो एक टाइम जोन को फॉलो करता है, और पाकिस्तान के तमाम शहरों में वक्त जो है वो एक सा होता है. Big countries such as USA, Canada and Australia may be divided into 3 or more time zones. और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं लाइक कैनेडा, USA, इनमें डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं. इट मीन्स के ये जो सिटीज़ हैं वो एक टाइम को फॉलो नहीं करती. इसमें इसके एक शहर में अगर एक टाइम है तो दूसरे में उससे 1 और आगे या 2 आवर्स आगे टाइम होगा. As we move around the globe, we will eventually reach a place where the time is either one day ahead or behind. और अगर हम ग्लोब को और ज़्यादा मूव करेंगे, यानी कि और ज़्यादा कंट्रीज़ को देखेंगे, तो उनमें टाइम जो है वो एक दिन का भी फ़र्क होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में. एंड दिस प्लेस इज़ नाउन एज इंटरनेशनल डेट लाइन. एज यू कैन सी इन द मैप, द ऑरेंज लाइन इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन. ऑस्ट्रेलिया एंड फ्यू अदर कंट्रीज़ आर अ डे अहेड ऑफ यू. इट मीन्स के ऑस्ट्रेलिया हमसे एक दिन आगे, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो हमसे एक दिन आगे हैं टाइम जोन के लिहाज से. Now let's do some questions from this topic. What is international dateline? As we have learnt, when we move around the globe, we will eventually reach a place where the time is either one day ahead or behind. This place is known as international dateline. Question number 2. Earth is divided into how many time zones? ज़मीन को कितने time zones में divide किया गया है? The answer is Earth is divided into 24 separate time zones. और ज़मीन को 24 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है. सो दीज आर द आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज फ्रॉम आवर वर्कबुक. दिस इज़ द मैप. बाय यूजिंग दिस मैप वी विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द पेज. ऑन द नेक्स्ट पेज, लेट्स स्टार्ट. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कैपिटल सिटी एंड प्रोविंस. इन द नॉर्थ 30 डिग्री 15, कैपिटल सिटी इज़ क्वेटा, एंड इन ईस्ट 66 डिग्री 55, Balochistan province is Balochistan. 31 degree 32 north,
Capital city is Lahore and its province is Punjab. 24 degree 53 north, Karachi. Capital city is Karachi and the province is Sindh. And 34 degree 02 north, the capital city is Peshawar and the province is KPK. In the next part, we will draw lines to match the description. Let's start. Latitude are also called parallel lines. The equator is at its 0 degree. Lines running in an east-west direction and imaginary horizontal lines. And in longitudes, these lines are called meridians, are at 180 degrees, and lines running in north-south direction and are not parallels and imaginary vertical lines. So this is your today's lesson. Learn it and write it. Meet you in the next class. Take care of yourselves. Allah Hafiz. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है।